Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about supervised learning in Python. Means using Python, how we can implement different supervised learning techniques. For that, we are going to use Colab. Okay. Now, first of all, what do you understand by supervised learning? Supervised learning is a type of machine learning where the model is trained on level data and it learns the mapping between input features and the output level. तो supervised learning क्या है? जो we know that in machine learning we basically deal with supervised learning and unsupervised learning. Different other learning like semi-supervised learning, reinforcement learning. ठीक है, ये सब भी है, but supervised learning and unsupervised learning basically. Supervised learning में आपके पास डेटा के ऊपर नॉलेज है, you know about those data, लेवल है, डेटा लेवलिंग आर देयर. तो टू प्रोसेस हम करते हैं यूजुअली. फर्स्ट हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग, राइट. तो वो होता है सुपरवाइज लर्निंग. तो यूजुअली ये क्या करते हैं हम, एक मैपिंग इनपुट फ्यूचर से आउटपुट लेवल तक, एंड आवर गोल इज टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑन अनसीन डेटा. तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट रॉ डाटा. ठीक है. सुपरवाइज मतलब एक सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर क्या करते हैं? सुपरवाइजर आपको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, राइट. सो द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड देन this training data set using some algorithm, right? After that testing, right? Then output. तो ये डेटा था, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट, राइट. then processing and then testing, right? Accordingly टेस्ट करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलेगा. कितना एक्यूरेसी है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है वो हम देखते हैं. तो इसमें की कंपोनेंट्स जो है सुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या है? इनपुट है. इनपुट मीन्स दोस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, राइट. देन आउटपुट. आउटपुट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ क्या है? लेवल. जो जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या होगा? कुछ लेवल्स होगा, यस और नो और लाइक दैट. ठीक है. कि आप बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ raining tomorrow? Then either it will be yes, it will be no, like that. ठीक है. तो ये लेवलिंग होगा. देन आपने देखा ट्रेनिंग डेटा, डेटा सेट विथ नोन आउटपुट्स. देन ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट. सो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और जो आपको आउटपुट एक्चुअली मिला, इन दोनों के बीच जो एरर है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, राइट. दैट इज द मेन एम. हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स है. जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू दैट स्लाइड. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट. ये लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्रीज हो गया, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, KNN, न्यूरल नेटवर्क्स. ये सब आपका क्या है? सुपरवाइज लर्निंग का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ एल्गोरिथम का एग्जाम्पल्स है. नाउ क्योंकि ये क्लास में हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट. विल मोर पुट मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिकल्स. तो बेसिकली व्हाट आर द मेन स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग इन पाइथन कोलेब. तो पहले आपको डेटा को लोड करना पड़ेगा. तो पहला स्टेप होगा डेटा लोडिंग. टाइपिकली डेटा कैन बी लोडेड फ्रॉम डिफरेंट डेटा सेट्स, राइट. डेटा सेट लाइक इन CSV. डेटा सेट कहाँ कहाँ हो सकता है आपका? फॉर्मेट मतलब CSV में हो सकता है, एक्सेल और अदर डेटाबेसेस से. ठीक है. और कॉमन जो पाइथन लाइब्रेरीज होगा हम इनको इंपोर्ट करेंगे, लाइक पांडास है आपका, नाम की है, स्काकिट है, राइट. सेकेंड स्टेप में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देंगे, जहाँ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, फीचर स्कैनिंग, splitting the data set into training and testing. मैंने कहा ना, डेटा सेट को हम ट्रेन, डेटा सेट में से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, like 70 to 80% we will use for training, remaining 20 to 30% for 30 to 20% for टेस्टिंग. ठीक है. जो मैंने क्या बोला, ट्रेनिंग में हम ज्यादा फोकस करेंगे.
देन आपको मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी डिफरेंट एल्गोरिथम आपको बताया कि लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, केएनएन, तो डिफरेंट एल्गोरिथम है, उसको चूज करना होगा आपको। तो आपका प्रॉब्लम इधर आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है या तो रिग्रेशन हो सकता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। ट्रेन करेंगे एंड आफ्टर दैट during the training process we will tune the hyperparameters. So hyperparameters means those parameters by manipulating the values of which we will have different outputs, right? So to choose a hyperparameter is really very important, ठीक है। उसके बाद हम जो मॉडल हमने बनाया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इवालुएट करेंगे। एंड फॉर दैट वी विल यूज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। तो क्लासिफिकेशन के लिए सब यूज करेंगे। रिग्रेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आरएमएस यूज कर रहे हैं, आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, क्लासिफिकेशन में हम लेवलिंग को, कैटेगोरिकल कुछ आउटपुट हमें मिलता है, लाइक जैसे कि इज इट गोइंग टू रेन टुमारो, तो क्या होगा आंसर आपका, यस और नो, लाइक दैट। एंड फॉर रिग्रेशन वी विल हैव सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आउटपुट दैट what what will be the means maximum rain volume tomorrow that we may have tomorrow, तो उसमें कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, राइट। Then we have prediction and visualization. We'll try to predict the results on some kind of unseen data and then visualize the performance. तो ये आपका, these are the steps that basically we have during the supervised learning process. Now, up, if we talk about some one example, like we can take linear regression, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी को यूज करना होगा। and for to predict suppose house prices based on certain features, तो हम हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे लिनियर रिग्रेशन। मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो लिनियर रिग्रेशन है हमें कहाँ से मिलेगा, ये मॉडल स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी। तो हम कोलैब में करेंगे, right? We are going to use Google Colab. So to use Colab, simply you have to visit that Google Colab and then you have to create a new notebook. वहाँ आपको मिलेगा, जब when you enter that Google Colab, you will have different option. You have to select this one, that is create a new notebook. Then first important thing is that you have to import the libraries. Okay, आपको libraries को import करना पड़ेगा। Then यहाँ पे हम नाम की import कर रहे हैं, right? Just a minute. Okay. NumPy, then pandas, import pandas. Then we are importing this scikit-learn. So from sklearn model selection, import train underscore test underscore split. As I have told you that we have to split the dataset into two parts, training and testing. ठीक है, ट्रेनिंग में ज्यादा देंगे, टेस्टिंग में कम। तो that we have to do with this one. Then from sklearn linear model input linear regression. So linear regression obviously एक linear model है, तो हम यहाँ से सारे चीज तो हम sklearn से ले रहे हैं, but specifically we are showing here that from sklearn linear model import linear regression. Then from sklearn matrix import mean squared error R2 square. क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों कि हमें क्या करना है, आपको accuracy determine करना होगा कि how much accuracy we are actually obtaining, right? So for that we have to do means import these things. So कहाँ से हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स से ले रहे हैं। तो ये सारे वैल्यूज हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स से, राइट। देन ये हो गया आपका। आफ्टर दैट ये सारे लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू शो द आउटपुट। फॉर दैट वी आर यूजिंग what matplotlib pyplot hashplot, we are importing that. Then dataset को load करेंगे। Now this dataset, this is the California housing dataset, we are taking it from scikit-learn. So load the dataset, you can see here, right?
load the dataset from sklearn.dataset. From sklearn.dataset import fetch California housing. ये सिस्टम वहाँ पे है ऑलरेडी, हम बस उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाउसिंग, और इसमें हमने ये फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग को रख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट डेटा फ्रेम, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग दिस पीडी। ये पीडी क्या था? ये हमने जो पांडास को इंपोर्ट किया था उसका एक इंस्टेंट पीडी है, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। देन df pd डॉट डाटा फ्रेम हाउसिंग डाटा कॉलम्स कितना है, हाउसिंग फीचर्स, हाउसिंग डॉट फीचर्स नेम्स, तो इतने नंबर ऑफ हमने कॉलम्स दिए हैं। df टारगेट हाउसिंग टारगेट df हेड, तो इससे हेडिंग क्या, हेडर्स क्या क्या है, that will be printed. Then pre-processing. For pre-processing, I told you that we are just using here 80% of training and 20% of testing. So for that, we are using this one, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train underscore test underscore split x, y टेस्ट साइज। देखो यहाँ हमने 0.2 दिया है, ठीक है। सो टेस्टिंग के लिए हमने ओनली 20% रखा है। रैंडम स्टेट 42, रैंडम स्टेट 42 बाय डिफॉल्ट, मैक्सिमम केस में हम 42 ही लेते हैं। तो यहाँ x क्या है, df हाउसिंग डॉट फ्यूचर नेम्स एंड y df टारगेट। देन ट्रेन किया, लिनियर रिग्रेशन यूज किया हमने, लिनियर रिग्रेशन मॉडल, मॉडल फिट दिस वन। इवैल्यूएट किया, y प्रेडिक्शन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्सटेंस। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के लिए हमने क्या यूज किया है, मीन स्क्वायर एरर, राइट, एमएसई, वाइट इज कॉमा वाई प्रेडिक्शन। ये जो है, व्हाट इज दिस एरर, एक्चुअली एरर ये है कि हमने जो प्रेडिक्ट किया और जो आउटपुट करेक्ट मिला है, एग्जैक्टली आउटपुट जो है, और हमने जो प्रेडिक्ट किया था, द डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें दे रहा है आपका एमएससी में, ठीक है। और आर स्क्वायर स्कोर भी हमने निकाल दिया यहाँ से, एंड उसको प्लॉट कर दिया विजुअलाइजेशन में, एंड फॉर दैट प्लॉटिंग वी आर यूज पाइप्लॉट, राइट। प्लॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया हमने, एक्स लेवलिंग में एक्चुअल प्राइसेस, वाई लेवलिंग में प्रेडिक्टेड प्राइसेस, और टाइटल दे दिया एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड हाउस प्राइस। सो एक साथ रहेगा ये वैल्यूज, तो इसका मतलब हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू जो था, प्रेडिक्टेड जो वैल्यू था वो सही है, लगभग सही है। एग्जैक्ट 100% तो हम कर नहीं सकते, बट इफ द एक्यूरेसी इज मोर देन 80% देन इट इज कंसिडर्ड एज गुड। ओके, सो एक सिमिलर लाइन में रहेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड। ओके, तो थोड़ा बहुत आपका इधर मतलब दे में बी around a small distance apart from the actual value, that will be considered okay. But if the distance is more, if they are separated more, then that will not be considered as a good prediction. Now let's do the practical. Just a minute. So you can see here I have this code I've written in this Colab. So सबसे फर्स्ट स्टेप था, क्या था, मैंने क्या बोला था, हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी से डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना था, ठीक है। यू कैन सी हियर आई एम जस्ट रनिंग दिस। यहाँ क्या है, जितने भी चंक ऑफ कोड हैं, हर एक को आप प्ले कर सकते हो, हर एक को रन सेपरेटली कर सकते हो। आइदर यू कैन पुट ऑल द कोड्स इन द वन चंक, और यू कैन पुट देम डिफरेंट। आई एम पुटिंग इन डिफरेंट so that I can show you individually. So first step is to import all the library files, ठीक है। So ये successfully, this is, see, you can see here 3 seconds, and above it right symbol means these codes are successfully run and the time taken is 3 seconds, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, इनपुट नाम पी एस एन पी, इनपुट पंद्रह एस पी डी, बाकी सब चीज ठीक है। देन नेक्स्ट इज हमने क्या किया था, डाटा सेट को लोड किया था, कहाँ से किया था, एसकेलार्न से, एक प्री डिफाइंड डाटा सेट कैलिफोर्निया हाउसिंग से हमने डाटा सेट को लोड कर लिया, हाउसिंग में रख लिया। आप इसको एक डाटा फ्रेम में सेंस करें। डाटा फ्रेम मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। वी आर पुटिंग द डाटा इन ए structured way, otherwise those are in CSV or different files, so we are now keeping them in column wise structured. You can see here this is the head. Now from this data frame you may have different plots so that you can easily visualize the data. See,
here there is option view recommended plots, यहाँ click कर सकते हैं आप लोग. Now you can see this many search are now displaying here. कोई भी एक search को आपको जानना है, suppose you want to know more on that particular search, you just click there. Okay. You can have a look on every search plot. दिखाई दे रहा है आपको? So, first important thing that here I liked one thing that time will be displayed for after every chunk of code that it is trying to execute. See, to display this output, how much time we have taken, this colab taken 5 seconds. So this is about longitude and latitude, graphical distribution of houses by target, because we are trying to predict the house price. So location also matters, right? See, in a data science means project or in any machine learning kind of project, we have to first carefully understand the features. What are the important features that we have to target, right? So dimension reduction also becomes a very important part of any SaaS project. Okay, now next stage क्या था? Split the dataset into features and target. Okay, तो हम ये कोड रन कर रहे हैं. तो this is done within 1 second. 0 second यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है? Then now next step is to we have to create a linear regression model. तो model is as a linear regression. इसमें x train and y train जो डेटा था variables. Now we are going to fit them. You know that you have to know that obviously this linear regression equation y is equal to mx plus c. ठीक है? So my theory classes are there. Now here I am concerned about the practicals only. So if any doubt, the person you can ask me directly. And you can see here there are two variables we are using, x train and y train. We are trying to fit this value in this linear regression model. Just run this. Well, done in 0 seconds. 0 second means within 1 second means it is, you can say some microsecond it has taken. That time you can exactly calculate using tic-tac-toe. Now, let's predict on the test data. Y predict, model.predict, X test, MSE, mean square errors, Y test and Y predict. मीन स्क्वायर एरो क्या है मैंने बता ही दिया था कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जो हमें मिला है मतलब एग्जैक्टली इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है that error, and we always try to, our objective is to minimize this error, right? And r square, so ये वैल्यू हम प्रिंट करेंगे अभी. So मीन स्क्वायर एरो हमें मिल रहा है 0.555. It's almost okay. Okay, then r square value 0.57. Now let's predict the values, means we should have some kind of visualization of the experiment that we have just conducted. We want to know the output in some kind of chart. So let's do this. I'm using scatter plot here. Okay. So you can see here this x-axis is representing actual prices, y-axis is predicted price. So these values which are aligned on this means particular, you can consider this as one curve where these points are lying. So these points are okay, but these few points you can see their effort from each other, they cannot be considered as good prediction, but it's okay. As I told you, almost up to 80% of accuracy we can accept. But yes, as per some different types of studies are there, some different needs are there. Like if we deal with some medical problem, then our accuracy should be obviously better than this one. So problem to problem, we may have different types of or different values of accuracy that will put it or we will fix it before doing this model prediction or
You can fix that, say 80% for some normal kind of observation, and above 90 up to 95, 99, whatever, you can consider it for medical based observation. ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। और ये तो ठीक है, ये आपका 80% से जितना भी ऊपर है ठीक है, और 80% से बिलो होगा तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ए गुड मॉडल। सो दिस इज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल गो फॉर वन मोर प्रैक्टिकल ऑन से एसवीएम। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम एसवीएम के ऊपर करेंगे। सो यू डू दिस प्रैक्टिकल टुडे itself and let me know if any difficulty you are facing. Okay, thank you.